नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए आयोजित इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। Welcome to this 6-day program on the professional development of teachers of colleges and universities for the implementation of the National Education Policy 2020. This program is being conducted by the Indira Gandhi National Open University and is equivalent to the UGC HRDC program. As you are well aware, this program is being conducted through the LMS, and we have provided a range of topics for you through the e-content. You will find modules with 14 units as well as many videos which you can see at your own convenience in your own time. They will also be available subsequently on YouTube. There will also be an opportunity for you to present your views and ideas to the discussion forum. At the end of the program, there will be an assignment and there will be assessment. This batch is the second batch. आप सभी दूसरे बैच में हैं। इससे पहले एक बैच पहले भी हो चुका है और उस बैच में लगभग 6000 टीचर्स ने भाग लिया है। अभी इस बैच में लगभग 9000 टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको बताएं। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन हो, होलिस्टिक एजुकेशन हो, GR के बारे में बातें हों, और इफ़ दे आर रिलेटेड टू वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये सभी विषय इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। प्रयास ये रहेगा कि किसी तरह से द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल। टुडे टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड अदर्स and especially about skilling in vocational education, I am pleased to have with me Dr. Srikant Mohapatra ji, who is our Pro Vice Chancellor at the Indira Gandhi National Open University. Dr. Srikant Mohapatra ji has been the founder, Vice Chancellor of the State Open University of Odisha. He has served there as 2 terms. He has also been Controller of Examinations at the Sikkim University. At IGNOU, he has served in many high positions, including that of Director Regional Services Division, Electronic Media Production Center, as well as Registrar of the Student Evaluation Division. He is also looking after skilling at the national level on behalf of IGNOU, and I will request him to take this session on perhaps reimagining vocational education, or in case you have any other questions to ask related to the national education policy, he would be the best person to answer them. आप किसी भी विषय पे अपने जो प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में उसे लिखिए और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे. So I request you to take forward this session. Thank you. Recommendations on the National Education Policy 2020. This policy has given us lot of ideas, lot of thoughts on many aspects of higher education, be it on quality of higher education, access, equity, inclusion in higher education. It has talked about holistic, multidisciplinary higher education. It talks about reimagining vocational education and skill education, making skill education a part of the higher education. It talks about leadership and governance aspect in higher education. Talks about teachers' education, talks about technology integration in higher education and online digital medium of teaching and learning. The policy tells us that the earlier higher education system in India
was too much fragmented. There are several kinds of higher educational institutions. At the university level, we had various nomenclatures of universities. Public universities, private universities, technical universities, health universities, law universities, agriculture universities, so on and so forth. Deemed universities, affiliating universities, unitary universities, and there are many other nomenclatures. Similarly, also, when you come to the college, we have government colleges, we have private colleges, we have constituent colleges, we have affiliated colleges, and there are many nomenclatures. So the policy talks about one holistic higher education system in the country. The higher educational institutions have been defined as multidisciplinary institutions providing holistic education, skill-based education, value-based education by using different pedagogy. It may be face-to-face, it may be open and distance learning, and it may be online. So this is something which is new in the National Education Policy 2020. National Education Policy also talks about universities which are research intensive, universities which are teaching intensive, autonomous degree awarding colleges, and constituent colleges. And it says that the system of having affiliated colleges or affiliation of colleges to the university should be done away with. So तीन तरह का विश्वविद्यालय, दो विश्वविद्यालय है, एक research intensive where research will be given maximum emphasis but teaching would continue, a teaching intensive university where teaching will be the primary activity but research will be also undertaken by the faculty, and degree awarding autonomous colleges. These autonomous colleges in the present system have no power to award the degree. Degree can only be awarded by the university. So this education policy 2020 says that autonomous colleges will also be degree awarding institutions. And then there will be constituent colleges. These colleges will be owned by the universities, they will not be affiliated to the university. So this is one major departure from the existing policy. It says that multidisciplinarity has not been encouraged in the previous education policy. Previous education policy at best has talked about interdisciplinary studies, but the present policy talks about multidisciplinary studies. Multidisciplinary means across disciplines, beyond discipline, and across different streams. We normally say science, arts, commerce, these are streams. And within science we have physics, chemistry, botany, geology, maybe geography. In arts we have political science, history, sociology, public administration. In humanities we have English, regional languages, Hindi, Sanskrit, so on and so forth. So interdisciplinary studies within a stream was earlier encouraged. Now it talks about going beyond the stream. So can we have an integration of STEM, that is science, STEM, science, technology, mathematics, engineering, getting integrated with social science, humanities, and skill education.
So it will become a multidisciplinary study. And it also says that skill shall become an integral part of the higher education system. Earlier, skill was not mainstreamed into the higher education. Of course, with the introduction of choice-based credit system by the UGC, skill component has been integrated, but then the weightage that needs to be assigned to skill education has not been given. So the present policy, that is National Education Policy 2020, also emphasizes on integrating skill education with the mainstream education. Of course, we'll be discussing about that in detail. Then it says optimal learning environment. It's a new thing which has also come up with the National Education Policy 2020. And when we say optimal learning environment, it implies curriculum, pedagogy, student support, and assessment methods. When we talk about curriculum will be multidisciplinary, skill-based, value-based, and when we say value-based, it should be human values, constitutional values, and so on and so forth. So the curriculum will be holistic, multidisciplinary, skill-based and value-based. Pedagogy will be face-to-face. It will be open and distance learning. It will be online. And it can be a combination of both, which the National Education Policy 2020 talks about blended learning. So blended learning can be blending of face-to-face with online. Blended learning can be blending of open and distance learning with online. So it talks about blended learning in terms of pedagogy. And student support, the third vertical or the parameter of optimal learning environment as per the National Education Policy 2020 is student support. And when we say student support, it means access, equity, inclusion without compromising on quality, affordable education for the large segments of the people, particularly the disadvantaged groups, because it talks about socially and economically disadvantaged groups are to be mainstreamed into higher education, and access to education shall be provided to all segments of the society. And special incentives, scholarships, extra classes, breeze courses shall be provided to people who are slow learners, who cannot cope up with the mainstream education. So extra learner support is required. That is the third pillar of optimal learning environment. And the fourth pillar of optimal learning environment is assessment. It says innovative method of assessment. Earlier our emphasis was on annual examination, end term examination, end semester examination, or summative assessment. This education policy says that high-stake examination needs to be avoided. Examination should be continuous, comprehensive, formative, so that continuously students' performance will be assessed. Our examination system has promoted rote learning or mugging up things or a tuition culture. So these needs to be thrown out. This needs to be stopped. The learning outcome and the graduate attributes are to be assessed in terms of performance of the student,
through formative assessment process. So something which is very innovative and new that the National Education Policy has thrown light upon. And other than this, the policy also talks about a 4-year bachelor degree program and a 1-year master degree program. It says that the 3-year bachelor degree program with 2 years master degree program will continue, but ultimately it will be a 4 years master degree program with 4-year bachelor degree program with 1-year master degree program with provision for multiple entry and multiple exit. That means after completion of first year of study, successful completion of first year of study, one can take an undergraduate diploma and join as a workforce or get a job, and then after a few years time one can re-enter the higher education, and similarly after completion of 2 years one can get an undergraduate diploma. First year is undergraduate certificate, second year is undergraduate diploma, and if it is a 3 years degree program, one will go get a degree, bachelor degree, and 4 years one will get either an honors degree or an undergraduate research degree. Those who get a undergraduate research degree will ultimately go to further research, but those who have done 4 years bachelor degree will take 1 year to complete the master degree program. So this is something which is quite innovative. And also, before I go to the vocational education part, I would also like to highlight that it talks about structural reforms or institutional reforms, in the sense that it talks about a Higher Education Council of India, which will be the highest authority for all kinds of higher education. And under the Higher Education Council of India, it has advocated different pillars or structures, that is Higher Education Regulatory Council, Higher Education Grant Council, National Assessment Council for Assessment and Accreditation, and it also talks about a General Education Council for setting standards, maintaining quality, preparing guidelines for credit transfer or multiple entry or multiple exit. So it talks about a whole lot of structural reforms or institutional reforms in higher education. Having said that, my emphasis today will be on reimagining vocational education as per the National Education Policy 2020. All of us know that India has the largest youth population in the world. It is almost 65% of the Indian population who are in the age group of 30 years or below, and almost 800 million people in India, or 80 crore people in India, belong to the category of youth below 35 years. But it is a paradox, it is an irony that only 5% of the Indian population have got vocational education. And when we compare this 5% of Indian students getting vocational education with that of other countries, will be surprised. Say for instance, a country like China has 25% people having vocational education. United States of America almost 50%. Around 55% is United Kingdom. 70% and more is Germany. 80% people in Japan having vocational education. And a country like Korea, South Korea, the number of people having exposure to vocational education is 96%. Now, 96% in South Korea and 5% in India is something very, very surprising. And why it is so? It is so because
the policy says that there are several reasons. One is that there is no definite career path from vocational stream to higher education or mainstream higher education. If you are studying vocational education at 10th, 11th, 12th, then further vocational education is not possible. You may go for a diploma in a polytechnic or a ITI. For mainstream higher education, there is no career path for vocational education. The second thing is, the general perception in our mind is that if you are very good in your studies, you will go for mainstream education. If you are not very good in your studies and if you are not getting a seat in higher education or higher educational institutions, then you go for vocational education. So those who are studying vocational education, they are looked down upon, that they are inferior, that vocational education is inferior to the mainstream education or general education. Now this perception, this attitude towards vocational education has not really promoted vocational education in our country, and that is the reason why only 5% of the people of India have got vocational training. And the National Education Policy 2020 says that this needs to be changed, because we are now formulating a national curriculum framework under the National Education Policy 2020. It envisages that exposure to vocational education should start from the middle level of school education. And when it goes to the secondary level of school education, vocational education should become a part of the curriculum, because the National Education Policy says that there is no difference between curriculum, co-curriculum and extracurriculum. So curricular activities, co-curricular activities and extracurricular activities will be treated as one and will be treated at par under the National Education Policy. So therefore, physical education, skill education, education in art and craft will be mainstreamed and will become a part of the school education at the secondary level and onwards. And it also says that it will also become a part of the higher education. That is the reason why we said from the beginning that our higher education will be holistic, multidisciplinary, skill-based and value-based. So skill education will become an integral part of the higher education system as per the National Education Policy 2020. So vocational stream will be mainstreamed in the higher education system. Earlier what was happening is, if you are doing a bachelor degree in arts, science or commerce, then you are not getting the kind of exposure to skill education which normally a student in engineering or in medicine or in law is getting. So now all kinds of education will become multidisciplinary. There will be no single teachers college or teachers university, law university, agriculture university. Every university will become multidisciplinary and will provide holistic education. And so also the general universities will promote holistic, multidisciplinary, skill-based education. So mainstreaming of skill education or vocational education at the school level and at the higher education level is one of the major recommendations of the National Education Policy 2020. And it also says that 21st century skills, that is skill like communication skills, these are employable skills which gives you employment. Communication skills, decision making skills, leadership skills, problem solving skills, time management skills. These skills are 21st century skills, and these are required in all kinds of employment. And therefore, it should also become an integral part of the holistic, multidisciplinary, skill-based, value-based education. So 21st century skills will be integrated, and the main skill, that is skill, knowledge in the field of, in different domains
We have almost 38 sector skill council in India, which are working under the National Skill Development Corporation, and all these are working under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So there are 38 different branches, whether it is IT sector, whether it is banking sector, whether it is financial sector, whether it is healthcare sector or agriculture sector or tourism sector. These are various sectors of our economy. So in every sector, certain skill sets, NOS, National Occupational Standards or Occupational Pacts, OPs, have been identified. And all these will be mainstreamed and will become part of the higher education system. So therefore, the National Education Policy for the first time says that the NSQF, National Skill Qualification Framework, will sync or will align with the National Higher Education Qualification Framework. So National Skill Qualification Framework has been framed to provide opportunities for upward mobility from vocational education to higher education. Now the new policy says, or the National Education Policy 2020 says, that the National NSQF, National Skill Qualification Framework, will be aligned with the National Higher Education Qualification Framework. And it says that there will be a national committee for integrating vocational education. NCIVE, National Committee for Integrating Vocational Education in the country, will soon be established, and in a phased manner within the next decade, the skill education or vocational education will be integrated into higher education, and this national committee will have members from the domain of vocational education, skill education, people from the industry and people from the ministries of Government of India will become part of it and will chalk out the guidelines and modalities for mainstreaming of higher education. So friends, what I would like to emphasize here is that the 21st century India aims at making the country a knowledge superpower. It aims at making the country a skilled capital of the world, a digital India, a skill India, Unnat Bharat. These are our objectives and main aims, so that India becomes a knowledge superpower of the 21st century. It will become a knowledge economy of the 21st century. And India also aims at becoming a Vishwa Guru by promoting Indian knowledge system in the international arena. So on the one hand, we will be promoting foreign universities, best foreign universities to come back to India to have their campuses, and on the other hand, we will take the Indian knowledge system to the entire world to make India a Vishwa Guru. So these are the standards that have been set before us by the National Education Policy 2020, and I hope that the idea of reimagining vocational education under the National Education Policy 2020 will lead to providing the largest workforce, skilled workforce to the country which we are presently lacking. Though we have the largest youth in the world, but we don't have sufficient number of skilled youths in the country. So the aim of the National Education Policy is to ensure that by integrating vocational education with school education, that is schooling and skilling, and integrating National Skill Qualification Framework with the National Higher Education Qualification Framework, there will be seamless movement of students from school education to vocational education and from vocational education to higher education, and in the process will ensure abundant supply of skilled workforce for the overall economic growth of the country. I'll stop here and will now
इनवाइट क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस स्किल के ऊपर, वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, या जो भी प्रावधान है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, उसके ऊपर पूछ सकते हैं। आपने री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया। काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं और उनके बारे में मैं पढ़ के बता देती हूँ और चाहूँगी कि आप इनका जवाब दें। किसी ने, हमारे एक शिक्षक मित्र ने पूछा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में किस प्रकार से स्किल को जोड़ा जा सकता है। वैसे तो आपने विस्तार से बताया था, मगर फिर भी अगर देखिए, पहले तो हमें, जैसे मैंने बताया आपको, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन क्या होता है उसको पहले आप समझ लीजिए। मैंने पहले से बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारे कंट्री में चल रहा था अभी तक, प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो ज्यादातर इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी स्टडीज को प्रमोट कर रहा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये एम्फासिस है कि इट शुड बी इंट्राडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एंड बियॉन्ड इंटरडिसिप्लिनरी, दैट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। दैट मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, humanities, physical education, skill education, everything should be merged together to make a holistic education for the holistic development of the students. So therefore, in this multidisciplinary studies, skill will become an integral part of education. Now, आपका सवाल यह है कि स्किल को कैसे जोड़ा जा सकता है। It is a very interesting question. पहले मैं आपको एक चीज का उदाहरण देता हूं कि अभी 3-4 दिन पहले फर्स्ट स्किल कॉन्वोकेशन हुआ भारत में, और जिसको कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें अभिभाषण दिया, फर्स्ट स्किल कॉन्वोकेशन। एंड इन दैट फर्स्ट स्किल कॉन्वोकेशन जो ITIs है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां के बच्चों के लिए जिन्होंने पास किया है ITI, उनके लिए स्किल कॉन्वोकेशन हो रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने उस स्किल कॉन्वोकेशन में 3 चीज के ऊपर कहा, स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड डिस्किलिंग। और प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा किया कि 5000 स्किल हब्स हमारे कंट्री में स्थापना किया जाएगा। 5000 स्किल हब्स। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज that these secondary schools will have collaboration with ITIs, because ITI में स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है एंड सेकेंडरी स्कूल में आपको जनरल एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन दिया जाता है। क्यों ना ये दोनों इकट्ठा हो जाए, ताकि स्किल एजुकेशन के लिए बच्चे मेन स्कूल से ITI में जाएं और ITI में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो जनरल एजुकेशन के लिए सेकेंडरी स्कूल में जाए, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉसिबल। सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज दैट स्किल हब्स विल बी क्रिएटेड इन ए हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है कि देयर विल बी वन स्किल सेंटर, मे बी इन ए ब्लॉक और इन ए तहसील, or maybe few skill centers in a district, and all the schools, general schools, will be aligned with that, so that this, whenever the skill training is required, the students of the general school will go to the skill hubs for skill training. Similarly, in higher education, there are 2 methods which are coming to my mind. One method which we have adopted in IGNOU. Now, what is that? We have said that we will give credit for 50% of the skill training that a student earns in other higher educational institutions. Say, for instance, we have signed an MOU with the NCHMCT, National Council of Hotel Management and Catering Technology. 50% of the skill training in housekeeping, in beverage, in food services, in hotel management is being provided by them. And 50% of the general education is provided by IGNOU.
So we give credit weightage of 50% to the skill training that is being provided in NCH MCT to the students, and rest of the general education is provided by IGNOU. And when it is combined together, it becomes a bachelor degree in hotel administration. And similarly, we have agreements with cost accountants of India, chartered accountants of India, company secretaries of India, where skill training is provided by them and general education is provided by us. Recently, Government of India has announced a new scheme called the IGNOU. And under the IGNOU, the Agniveers will be joining the armed forces, Army, Navy and Air Force. We have prepared a scheme that 50% of the skill training provided by Army, Navy and Air Force will be given credit weightage, and they will be recognized by IGNOU. Rest 50% of the credits the student will earn from IGNOU. So आपका जो सवाल था कि स्किल एजुकेशन को जनरल एजुकेशन या मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के साथ कैसे ऐड किया जा सकता है, उसका स्कूल एजुकेशन के स्तर पर और हायर एजुकेशन के स्तर पर हमने आपको बताया कि कैसे ये ऐड किया जा सकता है। सर, इसी के साथ का जुड़ा हुआ जो मुझे लगता है आपने आंसर कर दिया, बट फिर मैं सवाल पढ़ देती हूँ। हाउ कैन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बी इम्प्लीमेंटेड फॉलोड इन यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड करिकुलम? तो आपने कुछ तो जवाब दे दिया है, मगर सी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में 3 शब्द है, ABC, एकेडमिक, बैंक एंड क्रेडिट. Now it pertains to your academic qualification, your academic achievement, academic accomplishment. It is a bank because it will operate in the same procedure our banks are operating. That आप बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप बैंक से पैसा उठाते हैं. So this academic bank of credit will operate like a bank, either a scheduled bank or a nationalized bank, and it is credit. What is credit? In a bank, money is having value. In this academic bank of credit, your credit has the value. That means how much of credits you have earned, at what level you have earned. And what is credit? Credit is the final outcome or the learning outcome of the entire process of learning. Say you have taken admission in a choice-based credit system BA program, and the very first course is on environment studies, which carries 4 credit. Now if you complete that through your continuous and comprehensive assessment and final examination, you are earning 4 credits, and that 4 credit will be deposited in the academic bank of credit. So from one institution you are earning 20 credits, another institution you are earning 80 credits. Through the MOOCs courses which are offered through SWAYAM, you are earning 20 credits. So ultimately all these credits that you have earned will be accumulated in the academic bank of credit, and one of the institution where you have taken admission will award you the degree based on the rules and guidelines framed under the academic bank of credit. So academic bank of credit is nothing but it will operate like a bank where all the credits that you have earned through regular method, through ODL method, through online method, through 2 or 3 different universities together are deposited, and then degree will be awarded as per the parameters. Say for instance, UGC says that if you want to get a 3 years bachelor degree, you should have 120 credits. So if bank of credit, then the university where you have taken admission will give you a degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science or Bachelor of Commerce. So this is academic bank of credit where all the credits that you have earned will be accumulated, and once degree is awarded, the credit that you have earned will be debited from your account. थैंक यू सर. एक बहुत अच्छा सवाल है जो अंग्रेजी में पूछा गया है, मैं उसको पढ़ देती हूँ. हाउ द NEP विल बी एडजस्टेड टू पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स? आर ऑल द लर्नर्स कैन एक्सपेक्ट द सेम स्किल बेस्ड लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट प्लेसेस? How long is needed to make a learner
स्किलफुली परफेक्ट, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि स्किलिंग अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से की जाएगी, क्या स्किलिंग सेम होगी या कि अलग अलग होगी। तो ये प्रॉब्लम, देखिए ये सवाल जो है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीजनल वेरिएशंस and obviously education is a subject in the concurrent list. We have a union list, we have a state list, we have a concurrent list where both the union government and the state governments will make laws and rules. That is one aspect. The other aspect is that the National Education Policy 2020 says that when skill education will be integrated with higher education, the regional variations, regional requirements, regional capacities will also be taken into consideration. So it has not completely said that it will be something which will be imposed on the states. There are obviously regional variations. There are some regional specifications and requirements. Those needs to be taken into consideration. See, there are some places where there are a lot of industries. There are some places where there are no industries. So you can't compare both the places and say that skill education is possible at both the places in the same vigor. And also the National Education Policy says that within the next decade, in a step-by-step approach, skill education or vocational education will be mainstream with the higher education. It's not that overnight skill education will be integrated with the higher education. So the regional variations, the regional strength and weakness, the regional challenges and difficulties will all be taken into consideration before formulating a policy of integrating skill education with higher education at the state level. थैंक यू सर। एक सवाल है उन्होंने पूछा है आपसे कि ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के बारे में बताइए, जो आजकल एक जगह पे दो लगा। देखिए, डुअल डिग्री इज अ वेरी वेलकम स्टेप and it has already been announced by the University Grants Commission, and many of the universities including Indira Gandhi National Open University have notified that there is a provision for dual degree in the university system. Now what is that dual degree? That means simultaneously doing 2 degrees. At the same time you can do 2 degrees in the same academic session. So what we have done is, we have notified that if a student from other universities other than IGNOU is coming to IGNOU for admission, then they can take admission in any of the programs of the university. If a student who is studying in face-to-face mode in another university and coming to IGNOU for admission in another program, say somebody is doing a BSc in a regular university and wants to do a BA or a BCom from IGNOU, we allow them to do it. If some student who are doing online program from other universities or from IGNOU and want to do a ODL program from our university, we are also allowing them to do it. But if one student from our university wants to do 2 programs simultaneously, we put a word of caution that if exam dates are clashing or the same, or counseling dates are same, then the student has to accommodate. So the basic idea of a dual degree is that without wasting much of your time, if you are capable to do 2 degrees simultaneously, there is a provision for doing 2 degrees. But at the same time, one has to be very, very careful to see that your lab time, laboratory time is not getting clashed, your examination time is not getting clashed, or your class time is not getting clashed. So therefore, I would advise the students that go for it, but at the same time be prepared for self-study in most of the cases. सर एक और सवाल है, इन्होंने पूछा है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स. दे हैव सेड वेदर एनईपी ऑफर्स मल्टीपल एग्जिट एंट्री पॉइंट्स इन हायर एजुकेशन. इट वाज मेंशन्ड इन द बैचलर्स वोकेशनल गाइडलाइंस,
but has not been adopted by any institution. So इसके बारे में ये ज़्यादा जानना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है और कैसे हायर. See, UGC has already provided and announced the guidelines for multiple entry and multiple exit in particularly undergraduate and postgraduate programs. Now, what is this multiple entry and multiple exit? As I have said in the beginning, that if you have joined a bachelor degree first year and you have completed the first year is normally of 2 semesters and each semester having 20 credits, so 2 semesters you have completed 40 credits. You are entitled for a undergraduate certificate program, undergraduate certificate, and you can leave the university by obtaining, though you have joined the bachelor degree, 3 years bachelor degree, and after completion of 1 year you have demanded that I have completed 40 credits, so I may be given an undergraduate certificate. The university will give you undergraduate certificate if the university has introduced the provision of multiple entry and multiple exit. Now you go out of the university, you do a job or you join another university and further pursue your studies, or you come back to the same university after 2 years gap and pursue your higher studies. So it is, you have exited from the university, you have left the university and you have again joined the university till you complete your degree. So first year completion, 40 credits successfully earned, you get an undergraduate certificate. Second year, 80 credits you have earned, you get an undergraduate diploma. Third year successfully 120 credits you have earned, you get a 3 years bachelor degree. And fourth year successfully you have completed, you get a 4-year honors degree, bachelor's, or 4 years research degree at the bachelor degree level. So the level of these degrees are also different as per the National Skill Qualification Framework. Say for instance, after 12 you have got level 4. At undergraduate certificate you are getting 4.5 level. Undergraduate diploma you are getting level 5. 3 years degree you are getting 5.5 level certificate or degree. A 4-year degree you are getting 6, level 6 degree. So the level of these degrees are also different as per the National Skill Qualification Framework. थैंक यू सर. सर ये सवाल डायरेक्टली एनईपी से नहीं जुड़ा है मगर मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप चाहती हूँ कि आप इसका भी जवाब दें. इन्होंने लिखा है कि आई हैव हर्ड दैट डिस्टेंस एजुकेशन सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट और रिक्रूटमेंट. तो इसका जवाब आप जरूर इसका जवाब सिंपली यही देना है कि आप यूजीसी का अभी पिछले इस मंथ में नोटिफिकेशन आया है and they have also quoted the UGC ODL program, Open and Distance Learning Program and Online Program Regulation 2020, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि डिग्रीज अर्न थ्रू फेस टू फेस मोड, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड एंड ऑनलाइन मोड are at par for the purpose of higher education and for the purpose of employment. So it is a guideline issued by the University Grants Commission. So I don't want to make further comments on this. So there is it is not true that degrees earned through ODL or online are not treated at par with degree earned from a regular university through face-to-face mode. थैंक यू सर. ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जिससे कि किसी को कोई गलतफहमी ना रहे अबाउट डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग. इन्होंने पूछा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी पे बहुत सारे सवाल हैं. हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड इन क्लास 11 एंड 12? सो ये स्कूलिंग का सवाल है. सो देखिए, स्कूलिंग का सवाल है तो मैंने जो चीज़ आपको बताया कि अभी भी हम लोग स्कूल में कई तरह के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बट हमारा जो व्हाट इज न्यू इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 says that in the school education at the secondary level you are teaching mathematics, physics, social studies, humanities like English, Hindi or Sanskrit, but you have compartmentalized the education into
curricular, co-curricular and extracurricular. The first recommendation of the National Education Policy is that it will be integrated in a holistic whole for the holistic development of the learners. The second thing is that vocational education and skill education, which is running as a parallel line, will be integrated into the school education at the secondary level. So आप mathematics भी पढ़ेंगे, humanities भी पढ़ेंगे, social studies भी पढ़ेंगे, art and crafts भी पढ़ेंगे, physical education and skill education भी पढ़ेंगे secondary level में. ये अलग अलग आपका नहीं दिया जाएगा. It will not be, something will not be treated as curricular, something will not be treated as extracurricular or co-curricular. All these three, curricular, co-curricular and extracurricular, will be merged into an integrated school education system at the secondary level for the holistic development of the students. एक शायद लगभग आखिरी सवाल ही होगा, या उसमें ये इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनलिज्म पे उन्होंने पूछा है that how can these credits be used for international studies, whether our students will be able to go abroad and study using these kind of credits which are there, and basically studying abroad में हमारा जो ABC है क्या वो काम करेगा? See, this credit system is applicable internationally. It's not simply done in India, it is done in other Western universities and universities in the good universities in the East. So credit system is always common. And when we say the credit is the number of hours of study, how much of study, one credit is equivalent to 30 study hours. And this is not an Indian standard, this is an international standard. And the standard is set by the International Labour Organization when they identified the international qualification framework, standard occupational framework. So one credit is equivalent to 30 study hours. That is the reason why I said that if you want to earn 40 credits in 1 year, that is 40 into 30 is 1200 study hours. In a 3 years bachelor degree, it has to be 3600 study hours, 3600 study hours. So creditization is globally acceptable norm, and one credit is equivalent to 30 study hours is also a globally acceptable norm. So therefore, starting from the school education, vocational education, higher education, including your technical education and law education or teacher education, everywhere, the national credit framework is being developed by this country, where per year a student has to study for 1200 hours to earn 40 credits. So this 40 credits, when you earn from Indian universities, will also be acceptable globally across the world. And of course there are agencies which are given the responsibility for identifying the equivalence of the foreign degrees in India and Indian degrees in foreign countries. The Association of Indian Universities in India is given that responsibility of identifying and finding the equivalence of foreign degrees as per the Indian standards. सर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स कि स्किलिंग में किस प्रकार से प्रैक्टिकल्स कराए जा सकते हैं, स्पेशली इन ओडीएल. देखिए, मैंने आपको मॉडल्स बताया कि हम प्रैक्टिकल करने के लिए वी हैव ऑल्सो टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस. मैंने एनसीएच एमसीटी होटल मैनेजमेंट का मॉडल आपको बताया, बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेज दैट फॉर इंटीग्रेटिंग स्किल एजुकेशन विथ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन अडॉप्ट वेरियस मेथड्स और मॉडल्स. So this is one model, whether it is cost accountants of India or chartered accountants of India or company secretaries of India or the National Council of Hotel Management and Catering Technology जो hotel management का degree दे रहा है. The students are allowed to do face-to-face practical training there and come back to IGNOU or the distance education university to do the general courses. This is one model. The other model for our own students, we have skill hubs. For BSc program, we have
BSc labs available in higher education institution which we have had. For our nursing program, we have hired or signed MOU with the different nursing colleges which are recognized by the Nursing Council of India. For medical education, we have established our study center in medical colleges, mostly in government medical colleges, for skill training. So similarly, for all the other programs where skill components are there, even if we are a distance education university, but if the program has skill or hands-on training as its component, then hands-on skill-based training is provided in those institutions where infrastructure and human resources are available for providing skill training to students enrolled in distance education universities like IGNOU. थैंक यू सर। सर कुछ जनरल सवाल भी हैं जो रेज किए गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे वो पूछ रहे हैं कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा। काफ़ी लोगों ने ये पूछा है, तो हम उनको बता दें कि एलएमएस के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सभी मटेरियल्स जो हैं वो एलएमएस पे उपलब्ध हैं। जैसे हमने बताया 14 यूनिट्स हैं जो 4 मॉड्यूल्स में हैं, आपको उनको पढ़ना है। कुछ लोगों ने पूछा है, कुछ शिक्षकों ने पूछा है कि क्या ये हिंदी में उपलब्ध हैं। जी हाँ, ये हिंदी में उपलब्ध हैं। अगर आप एलएमएस पे देखेंगे तो इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी है। Other than that, there are 30 videos also which are available, and all these programs which we are doing live through the Swayam Prabha, the YouTube link is also provided. So lot of documents, जो यूनिट्स, वीडियोस, यूट्यूब लिंक्स और जितने यूजीसी के गाइडलाइंस है, आइदर ऑन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, और ये जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डॉक्यूमेंट, ये सब उपलब्ध है हमारे स्वयं के जो चैनल है उसके माध्यम से। बट दोज हु आर रजिस्टर्ड फॉर दिस प्रोग्राम विल हैव एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट्स। यस, क्योंकि आज आपका दूसरा दिन है, इसलिए आप उस एलएमएस को एक्सप्लोर कीजिए, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है सर कि ये लाइव काउंसलिंग क्या आज और कल ही होगी, तो हम इन्हें बताते हैं कि ये सभी दिन होगी ये लाइव काउंसलिंग फॉर नेक्स्ट 6 डेज ये कल से शुरू हुआ है। सो फॉर 6 डेज लाइव काउंसलिंग बिटवीन 3 to 4 विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ये इसका टाइम 3 से 4 प्रतिदिन अगले 6 दिनों तक 3 से 4 बजे तक ही होगा। आपको इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी बाद में आप इनको यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार अपने समय पर आप कभी भी देख सकते हैं। दे विल बी अवेलेबल फॉर यू टू वॉच। और हाउ कैन वी सी द कंटेंट पूछा है। जैसे हमने बताया कि आप इसको एलएमएस पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, और वीडियोस भी इसको कंटेंट को, जो टॉपिक्स चूज़ किए गए उन टॉपिक्स को वो सपोर्ट करता है। इसलिए आप दोनों चीज़ें, वीडियोस, कंटेंट, डिस्कशन फोरम में आप अपने सवाल जवाब वहाँ रख सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी चर्चा कर सकते हैं उस डिस्कशन फोरम के माध्यम से। सो आई थिंक लगभग काफ़ी सवाल आए हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पे। कुछ लोगों का कहना है कि क्या लिबरल एजुकेशन वर्सेस साइंस एजुकेशन, जब हम मल्टी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि दिस एजुकेशन पॉलिसी हैज सेंसिटाइज्ड अस, एंड ये जो प्रोग्राम हम आपके लिए कर रहे हैं, वी वांट टू बेसिकली क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एंड इसके अंदर जो वेरियस फीचर्स है, पॉलिसी इटसेल्फ इज फॉर द नेक्स्ट 20 years। सो ओवरनाइट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना मुश्किल होगा। सो धीरे धीरे जो आप बोल रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स कैसे होगा, हाउ इट विल बिकम हॉलिस्टिक, हाउ क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ इंटरनेशनलाइजेशन विल टेक प्लेस, एंड मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, दीज आर ऑल थिंग्स विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड फास्ट, एंड स्लोली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हमें पता है कि देर आर प्लेसेस वेयर देर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज and hardship for implementing, but nevertheless, if we have a will, if we are sensitized, if we are aware, then it will not be a difficult task to implement the different aspects and recommendations of the National Education Policy 2020. हमारे एक टीचर साथी ने लिखा हुआ है that most of the departments in the universities are autonomous. Merging them or breaking the walls of the discipline will create disturbance and raise issues towards the concept of qualitative education. This is a very beautiful question.
I would like to say that breaking the walls is the main recommendation of the national education policy. Our mindset has to change. We should look beyond our discipline. We should look beyond the four walls of the boundary of our discipline in which we have confined ourselves for such a long period of time. It is a learner-centric, student-centric policy. Therefore, we will do what the student need. We will not do what the teachers want. The teachers must know that it is a learner-centric policy, and this policy is entirely oriented towards the 21st century Indian learners, Indian citizens. Yes, I think this is what is bothering many people, because somebody else has written, another teacher has written, how can we implement this without breaking this barrier between arts and science? So this traditional thinking continues to... Not only arts and science, but arts and engineering, engineering and music, and so on and so forth. It is absolutely possible, it is absolutely doable. First, we should go slowly, and second, we should slowly change our mindset. So I think, sir, these are largely, there's one more interesting question about mobility of students, which is of course related to the ABC. What will be the criteria to allow the mobility of the student? Is it possible to allow... See, mobility of the students is very important. One is vertical mobility from one level to the higher level, and another is horizontal level from one institution to another institution, from a face-to-face mode system to a ODL system, from a ODL system to a online system. So the policy talks about both horizontal mobility for the students across disciplines, horizontal mobility of the students across different kinds of regular ODL and face-to-face, and also vertical mobility of the students from one level to the other level. So all these are possible, and these are doable. I think there is also concern about the fact whether there will be any financial support for bringing up these, as you talked about, research intensive universities and the other kind of universities, and whether there will be colleges, when the colleges come are to undertake this multidisciplinary education, whether there will be financial support for that from the government. Slowly, because the policy says that at least in the next decade, in each of the districts in India, there will be at least one multidisciplinary higher educational institution. So if that is done, then I think it is one of the recommendation of the national education policy. We are moving in that direction only, and it will be possible in a phase by phase manner, step by step manner. It cannot be done overnight. I think we need to close, but I would like to read one of the observations of one of the teachers who has written that vocational education has been treated at a lower level because vocational education development was not the objective of higher education. Higher education was focused on knowledge generation. It was a flaw, I would say, mixing it with higher education, and it is good that NEP 2020 has now brought in the much needed link between vocational education and higher education. Yeah, knowledge without skill has no meaning. Both needs to be integrated to make the students employable. So with this, we will come to the conclusion of this session of live counseling. And I hope that you have been able to learn more about vocational education and about all the other tenets of the national education policy which was spoken to. We have tried to answer your questions. हमने आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया है. आप हमें लिखते रहिए, हम इस लाइव काउंसलिंग के माध्यम से आपके जवाब देते रहेंगे. आप ईमेल से भी लिख सकते हैं, मगर this is the best way to do. On behalf of all of us, I'd like to thank Dr. Srikant Mohapatra ji. Thank you For taking this session and giving us the answers to many questions which were bothering us. Thank you so much, sir. Thank you.
Welcome, dear learners. I am Professor Mona Khare, currently heading the Department of Educational Finance and also associated with the Center for Policy Research in Higher Education at the National Institute of Educational Planning and Administration, popularly known as NEPA in New Delhi. It is my great pleasure to be talking to you today on a very, very important aspect that has been included and emphasized in the National Education Policy 2020, that is skills training, vocational education, and graduate employability in India. Now, what I thought was before we start talking specifically about the National Education Policy 2020, let us very quickly look at the context of the very reason as to why skills and employability emerged as a major challenge in the country and across the globe. Now, needless to say that as the very concept of development shifted from economic development to social development and later to human development, investments in education became paramount for two reasons. One, the quality of life, the higher earnings, and also the quality of jobs that it was rendering to the educated youth. That is how the new wave of linking education to skills and vocationalization, work-based skills and vocationalization gained importance in the 20th century onwards and became more strong in the 21st century. Now, as the literature is coming forth evidencing the closeness between higher and higher levels of learning with better development, not just for the self, but also for the whole community and for the whole globe, as has been embedded in the Sustainable Development Goals of 2030, the importance of higher education integrating with skills and vocationalization is growing day by day. So it is in this context, let us very quickly see what are the challenges that the educated youth in India have been facing as far as their employability or job readiness is concerned. Now, if we go by these statistics, the very first thing that comes to fore is the demographic dividend that India is quoted to have. Now, this demographic dividend can be exploited only with better educated and better skilled youth. However, the industry is aghast with the kind of graduates that we are producing today. Also, the statistics prove that more than 50% of the Indian youth are either not befitting the skills that are in demand by the industry sector, or the quality of skills that they have with them are not up to the standards as demanded by the industry. There are three kinds of gaps that emerged in one of the studies that we conducted in CPRHE at NEPA. And these three gaps were related to awareness gaps, the perception gap, and the third one was the skills gap. Now, as far as the awareness gap is concerned, this gap relates to the knowledge regarding the job market, the knowledge regarding what kind of jobs are going to be available in future, what kind of opportunities are waiting for the educated youth, what kind of skills are going to be in demand. So that kind of awareness is missing or is less as compared to what the industry sector is projecting at. After the awareness gap comes the perception gap. Now, the perception regarding the importance of a particular skill, be it the work-based skill or be it the generic skills, is also missing between the student, that is the learners, the teachers, that is the human force which is behind providing any kind of skills training to our youth, and the employers who are demanding the skills from these learners. So those kind of perception gaps also exist. And lastly, of course, the skills gap.
Now, skills gap also, if we see, can be divided into three components: the knowledge and technical skills. So the employers are reasonably okay with the kind of knowledge and technical skills that our graduates come with. Let us now come to the National Education Policy 2020 and what kind of a perspective it holds with regards to skill, and what kind of strategies does it propose. Now, I would like to call the National Education 2020 as to be unique and forward-looking as well as comprehensive. Why unique? Not because it has come after a long wait of 35 years, but unique because for the first time, the policy is trying to bring integrated elements of knowledge, skill building, and vocationalization at all levels together. Why I also feel like calling it forward looking is because it is more futuristic in the sense it is aligning itself to the four goals that are enshrined in the Sustainable Development Goals of 2020, that is quality and equitable learning for all and lifelong opportunities of learning to be provided to all people. It is the four pillars that basically form the foundation of the national education policy, which can be described by four E's of equity, enrollment, employability, and excellence. Now, all these four E's in some way or the other reflect the United Nations goals of bringing better quality, sustainable development and lives for all individuals. Very quickly, let us look at the few major principles on which the education policy is based, or it is enshrined in the national education policy. The very first one being the recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities and capacities of each individual student. Now, it is for the first time the policy is saying that every individual has specific talents and it is important to recognize, identify, and nurture them. The second aspect, which is very new in the policy, is the multidisciplinarity and skill-based education, which has to be brought in together at all levels. The third aspect, which is striking, is the extensive use of technology and training in digital skills also to be an integral part of learning. And the fourth is respect for diversity and local context. So for the first time, we are not just looking at global skills, but we are also giving equal importance to our local art, heritage, and culture. And this also to be a part of learning at all levels of education. Let us take a very quick look on some of the important elements that will help us to generate the kind of skills that the 21st century is actually demanding from the youth population today. Let me also share with you a simple concept of employment and employability. Often, employment and employability are used interchangeably. But are these two the same? Is a question that one must ask oneself. Now, if I have to answer in just one sentence, employment and employability are certainly not the same. Now, employability is basically an individual's preparedness for the world of work in totality. So, it comprises of a set of achievements in skills, in understandings, in personal attributes that can make graduates to gain employment, to remain in employment, to progress in employment, but also contribute in a meaningful fashion to the community and to the global development as well, aiming at sustainable development that flows down the generations. So this is how the concept of employability has to be understood, and this is how the concept of skills delivery
has been encompassed in the National Education Policy 2020. The second aspect of skilling that one has to understand is the pace at which the new skills are coming into feature or are coming into focus with the fourth industrial revolution and now the fifth industrial revolution knocking the doors, which is based on IT-based high technologies, AI, that is artificial intelligence, big data management, etc., etc. So how this pace of change, the kind of dynamism that the industry sector is experiencing by way of putting up the demand for new skills every day. So on this point also, the National Education Policy has tried to provide some kind of a guidance and direction as to how we can tackle this very aspect of being responsive to the needs of the new industry. Let me now come to specific areas in terms of skill development, vocational education. They are also able to imbibe many of the generic skills which we just talked about are missing in our youth. So at the lower levels of education, we are trying to integrate with some foundational skills, some generic skills. At secondary and senior levels of education, we are trying to move towards more functional skills. However, it is for the first time that even at the higher education level, in a concrete fashion, the skills-based education is being integrated at all the levels, be it undergraduate teaching, be it postgraduate teaching, or be it even PhDs, doctoral level teaching. Now, at all levels, we are trying to not just integrate skill building with each of these subjects, but a separate degree and diploma level programs in vocationalization are also proposed to be started. So this is how we are trying to build a continuum of skill delivery across all levels of education. Also, what is very interesting to learn here is we are also trying to break the silos. We found that training was not part of higher education system at all. In fact, there were institutions like ITIs or polytechnics or even technical education, engineering and professional education, which had a component of skill training, apprenticeship learning. All of these had a major content of skill building and training, but the general academic education at the higher education level was considered or was expected to be knowledge producing and imparting knowledge to the young learners by way of providing both horizontal and vertical mobility to the graduates. Now, when I say horizontal mobility, we are providing for students to move from general academic streams to vocational streams. There are greater choices and freedom and flexibility given to them to make a choice of the subjects that they would want to study, which may be a combination of science, of arts, of music, designs of postgraduate education or higher education. That is, we begin with, let us say, a 3-year undergrad program or a 4-year undergrad program with a 1-year postgraduate program. So all kinds of combinations and choices are being given to the students with greater flexibility to move between academic education, work-based education, skill-based education, and vocational education, thereby breaking the silos between the two. The third aspect that I would like to bring to fore is multilingualism and multidisciplinarity. For the first time, there has been a specific emphasis on bringing out literature, reading material and teaching in regional languages, also promoting English language and foreign language learning in the universities and also at senior levels of schooling. Multidisciplinary learning, interdisciplinary curriculum development, and multidisciplinary large-scale universities to be opened, which provide
a more holistic kind of a learning, more diverse kind of an exposure to our learners is also in the fray. Then comes the third aspect, that is experiential learning. Now, how experiential learning can be promoted is the National Education Policy proposes three areas. One, of course, is the work-based learning skills. The second is art-based skills. And the third is sports skills. So, all three kinds of experiences to be combined, curricular and extracurricular experiences to be combined to give a holistic personality development opportunities to our learners. The fourth aspect is, in a big way, a boost to higher education vocationalization has been given. Not just by integrating skill-based learning at every level of higher education and all the courses that are being taught in the universities and colleges, but very specifically aligning higher education to vocational education by developing or aligning it to the national skills qualifications framework. Now, this skills qualification framework, which has been developed for a vocation-based education for at 10 levels of education, which begins from the secondary, high secondary levels and goes up to the PhD levels. At 10 levels, descriptors have been given which are sector specific, which are industry specific, professional skills, core skills, technical skills which are required at various levels of workmanship in that particular sector or industry has been provided and developed, and the not just the curriculum has to be linked to these descriptors, but also the evaluation has to be linked to these descriptors. So in a way, standardize the skills training aspect. So the national occupational standards which come into picture over here, how the sector specific skills council under the overarching umbrella of the National Skill Development Commission has come out with national occupational standards to be linked with the national skills qualifications framework, and how they are going to be the guideposts of skills training and vocational education at 10 levels is something very interesting in this new education policy. Also, for the first time, the policy talks about recognizing prior learning. So, there are people who have learned through informal means. There are students who come from various backgrounds and learn from in a traditional methods, informal methods by their forefathers, by their parents, or maybe other informal means. For the first time, the skilled universities per se have been opened. The purpose of these skilled universities is to give degree and diploma based education right till the doctoral level only in very specific vocational subjects. Next aspect is how we can strengthen the student support system in the universities and colleges. The next aspect that the new education policy is trying to build is the new age skills and how to integrate digital learning and IT based skills at every level. So, for example, the Ministry of Electronics and Communication has started centers of excellence in various universities to impart high-end skills in IT and electronics to the students. The next aspect is building in the entrepreneurial culture. So, startup hubs, centers of innovation, how can these startups be funded? All these are part of the national education policy. And lastly, as to how international organizations can also be brought in to impart
various kinds of skills to our students is also in the fray. The two major ministries which are working hand in hand to achieve this is the Ministry of Education, certainly in the lead, but working very closely with the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The two together in the recent budget are proposed to launch about 5,000 skill centers in the very next year. Also is the e-portal, the virtual lab, 750 virtual labs that are proposed to be created in science and mathematics, 75 skilling e-labs which are proposed to be created. All of these give greater credential to whatever has been proposed or suggested in the National Education Policy 2020. However, if we look at all the various things which have been suggested to be implemented, it is too much on the platter. Three important areas or three important concerns that one has to keep in mind if we at all want to implement all of these proposed strategies in their true spirit. One is a proper mission mode, a proper vision and a proper mission to be able to embrace all of these proposals or all of these suggestions which have been made in the National Education Policy. The second is the acceptability to this change, acceptability to this change of integrating training and skills to collegiate and university teaching. And third, very important is to see how this entire training, skills training and vocational education integration doesn't impact the equity and inclusion in an adverse fashion. Because if we look at the current scenario, the kind of disparities and distortions that exist today in our higher education system can be categorized into four kinds. So we see disciplinary disparities. There are certain disciplines like engineering or professional education, which is very much in demand by the industry sector as far as employment and jobs is concerned. And it is also projected that more than 60% of the new jobs are going to come in the services sector in the coming years. The second disparity that we see is in terms of regional disparities. So we see that there are disparities that exist in terms of institutions which are placed in remote areas, rural areas. The quality distortion is one again very a big problem that we are facing. And the third is the social and gender disparity. So how to bring students from the marginalized section and also women into the fore of skill-based vocational learning and training at the higher education level. On that note, I thank you all very much for your patient hearing, and I hope that this kind of a 360-degree change that the National Education Policy is proposing by way of integrating skills training to education, not just at the curricular level or at the pedagogical level, but also at the evaluation and outcomes level, is something which is going to challenge us in the coming future. Thank you very much.
सभी अध्यापक साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कुछ बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और ख़ास तौर पर भारतीय भाषाओं के संदर्भ में मैं आपसे बातचीत करूँगा, जिसकी विस्तार से चर्चा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। निश्चित रूप से आप लोगों ने अनुच्छेद 22 को पढ़ा होगा, जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में, भाषा और संस्कृति के संबंध के बारे में और माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्यों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कैसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इस पर गंभीरता से और गहराई से, गहनता से बातचीत की गई। मैं आपके सामने कोई नई बात नहीं रखने जा रहा हूं, बल्कि बस अपने आप को एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में मैं अपने आप को खंगालने की कोशिश कर रहा हूं। ये आत्मावलोकन है मेरे लिए भी और मेरे सभी शिक्षक साथियों की भी। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सभी भारतीय भाषाओं ने और सभी भारतीय भाषा भाषियों ने एक साथ मिलकर संघर्ष किया। एक ओर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, फकीर मोहन सेनापति, प्रेमचंद, ताराशंकर बंदोपाध्याय आदि अनेक साहित्यकारों ने और जो हमारे नेता थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और नवजागरण के, पुनर्जागरण के जो पुरोहिता थे जैसे राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, सब ने भारतीय भाषाओं के उत्थान और भारतीय भाषाओं की प्रयुक्ति और प्रयोग के बारे में बात की। वे जानते थे कि हमें केवल अंग्रेजी सरकार से ही हमें मुकाबला नहीं करना है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ही मुकाबला नहीं करना है, बल्कि अंग्रेजी भाषा से भी करना है। क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीति थी वह नीति यही थी कि हम लोगों को न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी गुलाम रखा जाए। हमने एकजुट होकर ये संघर्ष लड़ा, वंदे मातरम का नारा लगाया और जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान बना। ये सारी बातें मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद लगातार इस बात का प्रयत्न हुआ कि भारतीय भाषाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर एक जो शिक्षाविद है या नीति निर्माता है वो आज़ादी के बाद और लगातार 75 वर्षों तक लगातार यही सोचते रहे कि किस प्रकार अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। काफ़ी प्रयत्न किए गए, काफ़ी सफलताएं भी मिली, लेकिन जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिली। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अध्यापक क्या कर सकते हैं। क्योंकि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर दृढ़ता से विचार किया गया है, गहनता से विचार किया गया है कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। शिक्षा नीति आए हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। अब इसके कार्यान्वयन पर बात करनी।
जो साधारण तौर पर यह देखा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा एक समृद्धि की भाषा बन गई है, सम्मान की भाषा बन गई है, यानी जो अंग्रेजी पढ़ता है वो श्रेष्ठ है। ये जो पूरी की पूरी मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलने का काम हम अध्यापक ही कर सकते हैं। कैसे करें इसको हम? कौन सी नीति अपनाएं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम अपने सामने रख सकें, उनका हम कार्यान्वयन कर सकें, क्योंकि अब वक्त कार्यान्वयन का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमने बहुत विचार विमर्श कर लिया, अब उसे धरती पर उतारने का या अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। हम अगर अपनी भाषा में सोचते हैं, अपनी भाषा में कार्य करते हैं, अपनी भाषा में ही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से एक स्वाभिमान, आत्माभिमान का भाव तो पैदा ही होता है। साथ ही साथ हम जो बात कहना चाहते हैं, वह बात हम अपने विद्यार्थियों को बहुत ही सहजता से और बिना किसी भाषाई अवरोध के पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो एक माहौल बना, उस माहौल में लगातार अंग्रेजी भाषा के प्रति एक लगाव बढ़ता चला गया। अब जब विद्यार्थी, छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो उसको सबसे पहले ABCD सिखाई जाती है। ककहरा तो उसे याद ही नहीं होता। जो गणित सिखाई जाती है वो भी अंग्रेजी माध्यम से। केवल ऐसा करने से, हम सब जानते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने भी ये कह रखा है, बाल में मनोविज्ञान भी ये कर चुका है, और हमारे विद्यार्थी भी और अध्यापक भी ये अनुभव करते हैं कि जितनी सहजता से, जितनी कर्मठता से और जितनी सफलतापूर्वक हम अपनी बात अपनी भाषा में विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, उतनी सफलता से, उतनी निपुणता से वह बात हम अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते। जब हम कक्षा में होते हैं तो हम अंग्रेजी माध्यम से अगर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थियों को अंग्रेजी से तो जूझना ही पड़ता है, और अध्यापक जो पढ़ा रहा है और वो उनके समझ में पूरा नहीं आता है, क्योंकि उन्हें एक भाषा से संघर्ष करना पड़ता है। यदि हमें अपने विद्यार्थियों को कुशल बनाना है, कौशल विकास से जोड़ना है, तो निश्चित रूप से हमें भारतीय भाषाओं को भी अपनाना होगा, मातृभाषा को ही अपनाना होगा। और हम सब जानते हैं कि मातृभाषा में अगर कोई बात बच्चों को सिखाई जाती है तो वो बहुत सफलतापूर्वक और गुणवत्तापूर्ण ढंग से उन बातों को वो सीख लेता है। ये आंकड़े कहते हैं कि स्कूल तो बहुत हैं, लगभग 15 लाख स्कूल, उससे भी ज़्यादा विद्यालय, महाविद्यालय सारे भारत में फैले हैं। लेकिन क्या कारण है कि स्कूल में नामांकन तो होता है, लेकिन 12वीं तक पहुंचते पहुंचते विद्यार्थियों के जो उत्तीर्ण होने का जो प्रतिशत है वो 25% से ज़्यादा नहीं होता। इसके कारणों में अगर हम जाएं तो भाषा इसका बहुत बड़ा कारण है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना, जबकि बच्चे ठीक से अंग्रेजी माध्यम नहीं जान पाते। मैं अधिकांश उन बच्चों की बात भी कर रहा हूँ जो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, जो अपनी क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में सीखते हैं। उनके लिए सीखना बहुत आवश्यक हो जाता है, भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन करना। बहुत सारे ऐसी विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। कार्य हमें ही करना है।
आरंभ हमें ही करना है, और ये जो आरंभ है वह हम अपनी कक्षा से कर सकते हैं। हम अपनी कक्षाओं में विद्यार्थियों से जब व्याख्यान देते हैं, तो अगर हम वह व्याख्यान अपनी भाषा में दें तो मुझे लगता है कि हम एक आरंभ कर सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, तमिल, तेलुगु, पंजाबी आदि जितनी भी भाषाएं हैं, हर एक क्षेत्र में इन भाषाओं में विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी इन्हीं भाषाओं में माध्यमिक विद्यालयों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से उत्तीर्ण होकर अपने उच्च शिक्षा के लिए आते हैं 12वीं के बाद। अब उच्च शिक्षा के आने के बाद उन्हें अचानक ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहां उन्हें अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग भी ये महसूस करते होंगे कि कक्षा में जो विद्यार्थी है, अगर अंग्रेजी के माध्यम से वो पढ़ रहा है या उसे पढ़ाया जा रहा है, तो वो कितना सीख पाता है, कितना नहीं सीख पाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कई बार आपको ये महसूस होता है कि क्या अगर हम विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाएं, हिंदी में पढ़ाएं, अन्य भाषाओं में पढ़ाएं, तो क्या वो अपने मार्ग में ज़्यादा आगे जा पाएंगे? क्या उन्हें पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की मिल सकेंगी? क्या वो अपनी ज़िंदगी में वो ऊंचाइयां हासिल कर पाएंगे जो ऊंचाई अंग्रेजी पढ़ने वालों को मिलती है? निश्चित रूप से केवल हमें अपनी इस मानसिकता से जूझते हुए इस दुविधा को दूर करना है कि अंग्रेजी माध्यम से अगर हम पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी ज़्यादा प्रगति करेगा, ज़्यादा उन्नति करेगा, और यदि हम भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाएंगे तो विद्यार्थी की उन्नति नहीं होगी, वो विदेश नहीं जा पाएगा, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे विद्यार्थियों से पिछड़ जाएगा। ऐसी बात नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं या जो अध्यापक भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, उनके मन में स्पष्ट होना चाहिए कि अध्यापन जो है, वो शिक्षा जो है, वो केवल सूचनाओं का माध्यम नहीं, केवल ज्ञान का अर्जन नहीं है, बल्कि उसके माध्यम से एक कौशल विकास भी होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है। अब जब हम कौशल विकास सिखाते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करना सिखाते हैं, तो आप ये विचार करें कि अंग्रेजी माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा सिखा सकते हैं या भारतीय भाषाओं के माध्यम से। आज ही मैंने समाचार पत्र में एक समाचार पढ़ा जिसमें एक राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जो पढ़ाई डॉक्टरों को करनी है, वह पढ़ाई वह वैकल्पिक रूप से हिंदी माध्यम से भी कर सकता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला डॉक्टर अपने रोगियों से, अपने पेशेंट से बहुत ही सहजतापूर्वक बात नहीं कर सकता है। अगर किसी को अच्छा डॉक्टर बनना है तो, और अच्छा इंजीनियर बनना है, इंजीनियर को अपने मजदूरों से बात करनी हो और अधिकारियों को अपने मातहतों से बात करनी हो, तो निश्चित रूप से अगर भारतीय भाषाओं का ज्ञान उन्हें होगा तो वो अपनी कार्य पद्धति में बेहतर ढंग से निष्पादन कर सकेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अध्यापकों को क्या करना होगा?
हम अध्यापकों को निश्चित रूप से ये करना होगा कि बराबर ये कोशिश करनी होगी, ये प्रयास करना होगा कि हम भारतीय भाषाओं में ही विद्यार्थियों को पढ़ाएं। कई बार इसमें दुविधा आ सकती है, कई बार इसमें मुश्किल आ सकती है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो लगातार अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपकी कक्षा में आते हैं, तो उनके साथ एक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जितनी भी शब्दावलियाँ हैं उन्होंने अंग्रेजी की सीखी हुई हैं। जब हम हिंदी में या अन्य भारतीय भाषाओं में उनको पढ़ाएंगे तो उनको उन शब्दावलियों में दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो क्या करें हम? तो आरंभ में हम ये कर सकते हैं कि हम अपने व्याख्यान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों को सम्मिलित करते हुए पढ़ाएं। ये एक आरंभ हो सकता है और इसका ये फ़ायदा ये होगा कि जो अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ के जो विद्यार्थी आए हैं, उनकी मातृभाषा तो हिंदी या भारतीय भाषाएं हैं, तो उनको भी ये महसूस होने लगेगा कि इन भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी अध्ययन सामग्री को समझना बहुत आसान है, बहुत सुलभ है, बशर्ते कि अंग्रेजी की। असल में हमने प्रयास नहीं किया, हमने प्रयत्न नहीं किया और यह मानकर हम चलते रहे कि अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ है, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ही हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अध्यापकों को ही इस मानसिकता से बाहर आना होगा, क्योंकि ये मानसिकता केवल एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, एक अध्यापक की मानसिकता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मानसिकता है। और एक अध्यापक के रूप में जब हम अपनी कक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से अध्ययन अध्यापन करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से जब वो विद्यार्थी यह महसूस करने लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों को ही यह महसूस करना है कि वह उसे जिस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उस माध्यम में वह कितना ग्रहण कर लेता है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें समझना कम और रटना ज़्यादा होता है। नई शिक्षा नीति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, में इस बात पर जोर दिया गया है कि रटंतु विद्या से हमें बाहर निकलना होगा, और यदि रटंतु विद्या से हमें बाहर निकलना होगा तो बिना अंग्रेजी को छोड़े हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। हम अंग्रेजी पढ़कर अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं, अच्छे नौकरी करने वाले बन सकते हैं, लेकिन हम आविष्कारक नहीं बन सकते। अपने चारों तरफ देखिए, चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे जर्मनी हो, थोड़ा दूर चले जाइए, तो सब अपनी भाषा में काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि अंग्रेजी एक विश्व भाषा है। अंग्रेजी विश्व भाषा नहीं है। अंग्रेजी इंग्लैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में और जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था वहीं अधिकतर शिक्षा का माध्यम है, और इसका जो दुष्परिणाम हुआ वह दुष्परिणाम ये हुआ कि हम लोग केवल पिछलग्गू बन गए, हम लोग विश्वगुरु नहीं बन सके। जो विश्वगुरु की संकल्पना है, उस विश्वगुरु की संकल्पना भाषा से आरंभ होती है। यदि हम अपनी भाषा में, भारतीय भाषाओं में अध्ययन अध्यापन करते हैं तो निश्चित रूप से विश्वगुरु बनने की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को हम बहुत ही मजबूती प्रदान कर सकते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर एक और पद्धति होती है पढ़ाने की, वाद विवाद संवाद, हम अपने विद्यार्थियों को के लिए परामर्श सत्र भी आयोजित कर सकते हैं, जिसको हम लोग ट्यूटोरियल कहते हैं, जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में छोटे छोटे ग्रुप्स में जो संवाद होता है वह तो हम भारतीय भाषाओं में कर ही सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और आप देखेंगे कि आपके लेक्चर में, आपके व्याख्यान में
जो बच्चे एक निष्क्रिय या पैसिव श्रोता के रूप में उपस्थित होते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजी में पढ़ा रहे होते हैं, जब आप उनको आप संवाद और आप आपसी संप्रेषण के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे समूह में जब आप पढ़ाएंगे, उनके प्रश्नों का निराकरण करेंगे और उनके मन में जो विषय को लेकर जो शंकाएं हैं उसका निराकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से संवाद बढ़ेगा। हम अध्यापकों के लिए ज़रूरी है कि यदि हमें इस शिक्षा नीति को पूर्णतः सफल करना है और उसको धरातल पर लेकर आना है, उसको असली अमली जामा पहनाना है, उसको व्यावहारिक बनाना है, तो ये बिना भारतीय भाषाओं के अपनाए हुए नहीं हो सकता है। अगर हम अंग्रेजी माध्यम से ही अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे तो ये शिक्षा नीति को हम पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अध्ययन अध्यापन करते हैं तो अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं, अपनी भाषा की बात करते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। पूरा का पूरा यूरोप अपनी भाषा बोलता है, और आप ये देखिए कि पश्चिमी देशों में जो आविष्कार हुए वो उन्हीं देशों में आविष्कार हुए जिन देशों में लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। अपनी भाषा में सक्रियता आती है। अपनी भाषा में यदि व्यक्ति सोचना शुरू करता है तो उसमें एक सर्जनात्मकता आती है। तो ये जो सर्जनात्मकता है, इसी सर्जनात्मकता से हम नई राहों का अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण कभी भी दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम अनुसंधान करने जब चलें तो वहाँ ये महसूस हो कि जिस क्षेत्र में हम अनुसंधान कर रहे हैं उस विषय में मेरी जो मातृभाषा है, मेरी जो राज्य की भाषा है, उसमें अनुसंधान के क्षेत्र में तो कुछ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उपलब्ध है। आपको मैं बताऊं कि जो बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, नोबेल प्राइज होते हैं, उसमें केस स्टडी के रूप में भारत को उदाहरण के रूप में बनाया जाता है। और जिसको हम लोग फील्ड वर्क कहते हैं, या क्षेत्रों में जाकर जो हमारे विद्यार्थी डाटा जो इकट्ठा करते हैं, वो उनको अपनी ही भाषा में करना होता है। तो ये एक भ्रांति है, एक गलत समझ का नतीजा है कि हम अनुसंधान केवल अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि गांधी जी ने इस पर बहुत जोर दिया, बुनियादी तालीम की बात की गई, और जब उन्होंने बात की बुनियादी तालीम की तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल पाठ्य पुस्तकें और किताबों में जो ज्ञान सीमित है वही शिक्षा नहीं है, बल्कि जो क्षेत्र में जाकर काम करना है, व्यावहारिक जो काम करना है, उसमें शिक्षा, कौशल और रोजगार, तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा का मतलब है मनुष्य का सर्वांगीण विकास। केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ने से मनुष्य का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अपनी संस्कृति को जाने हुए, बिना जाने हुए, अपनी संस्कृति को बिना पहचाने हुए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हम क्यों पीछे रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए कि हमने अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से हम कट गए, और जिस भूमि पर हम काम कर रहे हैं उस भूमि की भाषा को भूल गए। अब कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई अन्वेषक बनता है, सबको कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पर अपनी भाषा का इस्तेमाल करना होता है। मैंने
मैं बहुत सारे देशों का मैंने भ्रमण किया और वहाँ देखा कि अंग्रेज़ी में कोई बात नहीं कर रहा है। मैं पूरी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बहुत से देशों में गया, वहाँ देखा कि लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, मैं अंग्रेज़ी में बात करने की बात करता हूँ और उससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं ये देखता हूँ कि कई भाषाओं का एक साथ अर्जन करने की जो इच्छा है वो विद्यार्थियों में होती है। हम भी अपने विद्यार्थियों में यह विचार डालें, उनको यह प्रेरणा दें कि वो अपनी भाषा के अलावा अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, वो अपनी भाषा के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष इस शिक्षा नीति में आया है वह संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत की पढ़ाई और संस्कृत को समझना। हमारे पूरी पाठ्यचर्या में संस्कृत को एक महत्वपूर्ण स्थान देना जरूरी है और हमें सर्व शिक्षा में विश्वास करना चाहिए। हमें ऐसा विकास, सर्वांगीण विकास हम विद्यार्थियों का चाहते हैं कि वो न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि दूसरे विविध क्षेत्रों में भी, विविध विषयों में भी पारंगत हो सके, जिसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, स्किल ओरिएंटेड ये सब बातें करते हैं। तो उसमें यदि हम अपनी भाषा का इस्तेमाल करें तो अच्छा कौशल सीख सकेगा, दूसरे विषयों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। आज ये समय आ गया है कि हम शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की ओर अग्रसर हों, भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाएं और स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन के साथ साथ अनुसंधान की भाषा भी भारतीय भाषाओं को बनाएं। देखिए, अंग्रेजी माध्यम होने के कारण विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त बौद्धिक दबाव पड़ता है और उनकी जो सृजन क्षमता है वह सृजन क्षमता कमज़ोर होती है। इसलिए वो कुछ बौद्धिक दृष्टि से बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं। विद्यार्थियों को रटंतु तोता नहीं बनाना है। स्पष्ट रूप से इस शिक्षा नीति में यह बात कही गई है। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में एक सक्षम वार्तालाप तभी हो सकता है जब वह अपनी भाषा में बात करें, भारतीय भाषाओं में बात करें। हिंदी प्रदेश का व्यक्ति अगर अपने विद्यार्थी से, अपने अध्यापक से हिंदी में बात करता है तो बड़ी सहजता होती है। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने में बहुत मदद मिलती है। और एक जो संकल्प है हमारा कि आरंभ हम भारतीय भाषाओं से करें, उलटना होगा पूरी प्रक्रिया को कि हम आरंभ करना चाहते हैं अंग्रेजी से, बाद में घेलुए में भारतीय भाषाएं मिल जाएं तो सही नहीं। इसका विपर्य चाहिए, इसका उलट चाहिए अब कि हम आरंभ करें अपनी भाषा में। हमारा जो ज्ञान है, हमारे विद्यार्थियों का जो ज्ञान है वह ज्ञान मजबूत हो और एक परिपक्वता आने के बाद वह अंग्रेजी भाषा भी पढ़े, लेकिन एक भाषा के रूप में पढ़े, न कि एक माध्यम के रूप में उसका उपयोग हो। माध्यम के रूप में हम भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करें और भाषा के रूप में हम अंग्रेजी पढ़ें तो हम देखेंगे कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान में भी, बौद्धिक क्षमता में भी मजबूत होंगे और वो एक अलग भाषा अंग्रेजी भी सीख सकेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए आज अंग्रेजी सीखना
आवश्यक नहीं है। हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं, उसका संदर्भ अंग्रेजी मानसिकता के दबाव में है। हमको उस दबाव को हटाना है, और यदि हमने अपनी कक्षाओं में वह दबाव हटा लिया तो बहुत बड़ी सफलता हमको मिलेगी। और यह जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी यदि हम इस दबाव से मुक्त हो गए। गांधी जी हमेशा ये कहा करते थे कि सच्चा शिक्षक विद्यार्थी को अपने विषय के भीतर ले जाता है, उसमें रस पैदा करता है और उसे उस विषय को अपने आप समझने के लायक बनाता है। तो ये तभी होगा, यह उद्देश्य तभी होगा जब हम विद्यार्थियों के साथ भारतीय भाषाओं में ही संपर्क करें। आज बहुत सारे स्रोत सूचनाओं के हमारे पास उपस्थित हो रहे हैं। गूगल है, सोशल मीडिया है, लेकिन क्या यही सूचना हमारे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। हमारे विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है तभी होगा जब उनका संपूर्ण विकास हो सके, और यह संपूर्ण विकास बिना अपनी भाषा को अपनाए हुए नहीं कर सकते। तो मित्रों, मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप प्रयत्न करें। इस अंग्रेजी के तिलस्म को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इस तिलस्म को तोड़ने की कुंजी हम अध्यापकों के अलावा और किसी के पास नहीं। हम आरंभ करें अपनी भाषाओं में, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग भाषाओं में हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करें। वाद विवाद संवाद अपने विद्यार्थियों के साथ करें। केवल अपने विद्यार्थियों के साथ संपर्क कक्षा के अंदर नहीं रखें, बल्कि कक्षा के बाहर भी हम अपने विद्यार्थियों से संपर्क करें और भारतीय भाषाओं में उनसे बात करें। हम उनसे कन्नड़ में बात करें, हम उनसे तमिल में बात करें, हम उनसे मलयालम में बात करें, जहाँ जो भाषा उपलब्ध है और अधिक से अधिक विद्यार्थी वहाँ पहुँचते हैं। एक निश्चित रूप से दुविधा और समस्या का विषय है, जहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के विद्यार्थी आते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए क्या किया जाए? निश्चित रूप से जहाँ अलग अलग प्रदेशों से जो विद्यार्थी आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी एक अवसर दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजी के अलावा वो अपनी भाषाओं में भी अपने को अभिव्यक्त कर सके। और इसके लिए आरंभ में अगर कक्षा में भी दो भाषीय का इस्तेमाल हो सके, या टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनकी भाषाओं को पकड़ सकें, तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी की अभिव्यक्ति क्षमता अंग्रेजी के तुलना में कितनी ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि एकाएक एक दिन में तुरंत कोई बदलाव आ जाएगा, इसीलिए मैं सैद्धांतिक बातें नहीं कर रहा हूँ, व्यवहारिक बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अब व्यवहार में जो कुछ कहा गया है शिक्षा नीति में, उसको व्यवहार में लाने का समय है। किसी भी सिद्धांत को व्यवहार में तभी लाया जा सकता है जब उसका हम प्रयोग करें। हमें प्रयोग करना जरूरी है, और प्रयोग करेंगे तभी ये पता चलेगा कि उसमें कितनी अड़चनें हैं, हमारे विद्यार्थियों को किन किन बातों का असर हो रहा है, या हम कैसे उसमें लगातार प्रयोग और परीक्षण करते रहें कि हम एक नई विधि निकालें भाषाओं के लिए। और ये विधि यही है कि हम प्रोत्साहित करें अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखने के लिए। मल्टीलिंगुअल बनाना है अपने विद्यार्थियों को, और ये बहुत
मुश्किल काम नहीं है। विद्यार्थी अपना विषय पढ़ें, दूसरी भाषाएं भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, लेकिन जो आधारभूत ज्ञान है वो ज्ञान अपनी भाषा में हासिल करें। हमें एक नागरिक के रूप में और एक अध्यापक के रूप में अपने को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले अध्यापक बदलेगा, अध्यापक की मानसिकता बदलेगी, तभी तो हम अपने विद्यार्थियों की मानसिकता को भी बदल सकेंगे। सबसे मुश्किल बात यही है, अपने आप को बदलना। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप देखें, अपना आत्मावलोकन करें कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं को हम आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें माध्यम के रूप में विकसित कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में पढ़ाएंगे तो वही पाठ्य पुस्तक होगी। आप जो कक्षा में जो व्याख्यान देंगे वो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत सारी बातें उसको पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगी। एक ये भी किया जा सकता है कि आरंभ में हम केवल उन्हें व्याख्यान नहीं दें, व्याख्यान की प्रविधि बदल दें। हम या तो अगर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दें वो हिंदी में दें, या हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो अंग्रेजी में दें। ऐसे ही दूसरी जगहों पर भी जहां मातृभाषा नहीं है वहां भी हम कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ाएं तो कन्नड़ में उसको रूपांतरित करें, कन्नड़ में पढ़ाएं तो उसको अंग्रेजी में रूपांतरित करें। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने भाषा को आसानी से रूपांतरित कर सकते हैं। एक साथ कक्षा में स्मार्ट क्लासेस की बात की जाती है, हम स्मार्ट क्लासेस का उपयोग करें और उसमें एक साथ द्विभाषी बनकर अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं। हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पाठ्य पुस्तकें भी बनेंगी, पढ़ने और पढ़ाने वाले भी बनेंगे। अध्यापक में यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा में पढ़ाकर विद्यार्थियों को एक सर्वांगीण व्यक्ति बना सकते हैं, अच्छा बौद्धिक व्यक्ति बना सकते हैं, एक अनुसंधान करने के लिए एक उर्वर मस्तिष्क पैदा कर सकते हैं। तो यही मैं आपके साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं यहां मैं, कि हमें प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा, और नई शिक्षा नीति को यदि कोई सही ढंग से कार्यान्वित कर सकता है तो वो है अध्यापक। अध्यापक की इसमें बड़ी भूमिका है और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे अंदर से अंतः प्रेरणा निकले कि हमें अपनी भाषा में पढ़ाना है, भारतीय भाषाओं में पढ़ाना है, तो निश्चित रूप से हम एक नई दिशा खोल सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए। हमारा राष्ट्र भाषा की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, हमारे विद्यार्थियों के मन में, हमारे मन में भाषा के प्रति एक आश्वस्ति पैदा हो, तो निश्चित रूप से यदि हम 5 वर्ष भी लगातार ये ऐसा कर लेते हैं तो 5 वर्ष के बाद ये दुविधाएं हमारे मन से हट जाएंगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से, अपनी मातृभाषा के माध्यम से विद्यार्थी ज़्यादा सशक्तता से अपनी बात कह सकेंगे, एक अच्छे बुद्धिजीवी बन सकेंगे और इस देश को, इस राष्ट्र को सभी क्षेत्रों में आगे ले जा सकेंगे और विश्व गुरु की संकल्पना को एक व्यावहारिक धरातल पर ला सकेंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस दिशा में प्रयत्न करेंगे,
प्रयास करेंगे और अपनी भाषा में, भारतीय भाषाओं में पढ़ाना शुरू करेंगे, अध्ययन अध्यापन शुरू करेंगे। आप आरंभ कीजिए, शुरुआत कीजिए, हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।